are going to learn today the CSS. Okay. So what is this CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet. Correct? Agree? Okay. So this CSS will help you to make your HTML tag looks more attractive and beautiful. More attractive and beautiful. Okay. Now see guys, I'll give you one good example. You people are the human beings, correct? Fine. When you are at home, we are in our home attire. करेक्ट? समझ में आता है ना इसका मीनिंग? जब आप घर पे हो तो घर के कपड़ों पे हो, ठीक है? हाँ. अगर आपको किसी ने बोला आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप घर के कपड़ों में जाओगे? Somebody says you have to go for interview, so you will not go in your home attire. Of course you want to be a look well attire. Okay, बहुत ज्यादा आपको हाई फाई नहीं दिखना है, but at least you should be in a good attire. Okay, that suits to your interview call. Correct? You are going to attend an interview in an MNC company, and according to the MNC company, of course you should plan something ki I should wear, like in gents case we will see they will wear trouser, shirt. No one will go in the jeans. Correct na? Already you people are attending the soft skills. I hope so. So in that they are telling you what will be your attire when you go for the interview. Correct na? Everyone agree? Yes, ma'am. Okay. So this is what we should look presentable. This is what we should look presentable. Fine. So now, guys, you had seen newspapers. Okay. You had seen the newspapers. And also you people had seen your notes you written in your book. Notes written in your book. Compare the two things. क्या फर्क है दोनों में? मैं अभी आप लोगों को जो CSS के नोट्स लिख के दे रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे? ये नोट्स आपके नोटबुक में लिख रहे हैं. करेक्ट? सम ऑफ यू माइट बी राइटिंग, some of you might be neglecting, some of you might be ignoring. Correct? Yes. हाँ, तो आप लोग कुछ लोग इसको सिंसियरली आप लोगों के नोटबुक पे लिख कर ले रहे, लेकिन मैं आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बोल रही हूँ. जो चीज आपने नोटबुक में लिखी है उसको आप न्यूज़पेपर से कंपेयर करो और बोलो मुझे क्या फर्क है. Newspaper is more attractive. More than written notes. Why? Why newspaper is attractive and why your notes are not attractive? Why can't you make your notes also attractive? See, simple reason. नोट्स मैं खुद पढ़ने वाली हूँ. न्यूज़पेपर एडिटर का काम है न्यूज़पेपर को एडिटिंग करके पब्लिश करना. करेक्ट? तो न्यूज़पेपर all around the world the people are going to read the news, and obviously the readers of the newspaper will get attracted to the newspaper if they found something interesting. Okay, आपके नोट्स में आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आपके पढ़ाई के लिए आपके नोट्स लिख रहे हैं.
लेकिन न्यूज़पेपर जो लिखा जा रहा है वो न्यूज़पेपर किसके लिए है? तो रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, न्यूज़पेपर में देखो न्यूज कम होती है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होते हैं, इजंट इट? Yes, ma'am. न्यूज कम होती है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होते हैं, पब्लिश लोगों को पब्लिसिटी मिलाने के लिए जो कुछ करना है, लाइक नाउ रिसेंटली यू कैन टेक द वेडिंग ऑफ अनंत अंबानी एंड राधिका। ओके, बहुत ज्यादा चर्चे थे कल तक उनके वेडिंग्स के। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? Yes, ma'am. ओके, so most of you people heard and you people will be seeing कि 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में भर भर के सिर्फ उनके लिए न्यूज आ रहा है, या जो भी उनके वेडिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से स्टार्स, व्हाट फेमस पीपल, दोज हु आर अटेंडिंग दैट सेरेमनी, वो सब लोगों का बारे में ही ज्यादा लिख कर आ रहा है। So to make this news more attractive, they make the use of some pictures. They arrange them in a beautiful manner. All these things are done. Okay. So same thing. Now you people, why you are creating a website or why you are learning the HTML to create a website? Because you are learning to create web page and our website is made up of web pages. Agree? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are creating web pages. You are creating web pages, correct? Our web pages include text, paragraph, headers, footers, images, links, correct? Yes, ma'am. Header, footer, images, links, videos, audios, correct? All these things are included in our web pages. Okay, we are creating the web pages in a future study to make an website. Okay, फ्यूचर में आप लोगों को एज खुद का एक वेबसाइट बनाना है. मे बी यू विल बी यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर दैट, लाइक एंगुलर और समथिंग एल्स. So you people are going to create the web pages and to create the future planning for this is to create a website. Now tell me why people are creating website or what is the purpose of creating a website? I want to start a business. See, जब पहले जमाने में लोग बिजनेस स्टार्ट करने का थिंक करते थे, दे स्टार्ट विथ थिंकिंग कि मुझे जगह चाहिए, मुझे मीन्स आई वांट अ पर्टिकुलर लोकेशन वेयर आई कैन स्टार्ट द बिजनेस, देन व्हाट शुड बी माय machinery. So many things are there to think over. But nowadays, the first step to think is what? Bring the business online. Hello? To bring the business online. Nowadays, yes, I speaking. हेलो. मैडम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है. Yes, ma'am. हाँ, मेरा एयरफोन भी हिल गया था थोड़ा सा. आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट? Advertisement. यस, एडवर्टाइजमेंट. ओके, अब ये एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू होगा? इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई विल से द फर्स्ट स्टेप, आजकल के जमाने में कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो पहले सोचेगा अपने कंपनी का वेबसाइट बनाए. Yes. They will think to create
वेबसाइट, कंपनी बनना, कंपनी का नाम, एवरीथिंग पीछे रह गया. सबसे पहले वो सोचेगा टू क्रिएट अ वेबसाइट. ओके, ऑफ कोर्स वी हैड प्लान समथिंग फॉर आवर बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर क्रिएटिंग द वेबसाइट. फाइन. और फिर देन वी आर मेकिंग द अदर प्लानिंग. तो वेबसाइट बनने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. ओके, जैसे कि यू कैन सी, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रोग्नोज, राइट? Prognoz Technologies. How you approach Prognoz? How you people approach? I think majority of you people approach by seeing the website. Yes, ma'am. Majority, some of you might be a referenced one, but majority of you had seen the advertisement of the Prognoz website, and through that you had taken or you understood what is the course and you had been given the follow-up and then you had taken. So see how, even though we are the service providers, we are providing you the service that is the learnings, and this service we are providing through our website. Okay, and see now the majority of courses are run online, so no problem of space also. कि अगर मुझे ऑनलाइन ही कोर्स रन करना है तो मैं अपने घर से बिजनेस चालू कर रही हूँ, करेक्ट? एंड इफ आई एम रनिंग माय बिजनेस फ्रॉम माय होम, आई डोंट हैव टू बी थिंक अबाउट द स्पेस, अबाउट द डिवाइसेस, करेक्ट ना गाइस? एक लैपटॉप लेके भी मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों रेंट पे स्पेस लूं, वहां पे डिवाइसेस डालूं? कोई नहीं आ रहा है ऑफलाइन, सबको मेरा ऑनलाइन क्लास चाहिए, Yes. करेक्ट? तो मेजोरिटी ऑफ, तो आज का जो थिंकिंग है दैट हैज बीन चेंज कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग वी आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग एन वेबसाइट, एंड वेबसाइट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बिजनेस, and then we will think for other factor like advertisement. Then you will think if something is going to be happen offline, so I will have an office, then I will have other machineries, other stationaries and all that thing. Okay, so now our part is that if I created a website and it is just like a notes in my notebook, who is going to read your website? अगर मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ और वो मेरे सिंपल सा नोटबुक का जो टेक्स्ट है उसकी तरह लिखा हुआ है, तो एनीबडी, आर यू गोइंग टू रीड दैट न्यूज़पेपर? No, ma'am. नहीं. आप लोगों को कुछ तो अट्रैक्टिव चाहिए. अगर कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं और अगर वो एकदम बोरिंग टाइप ऑफ दिख रहा है, तो वी नेवर गो इट अगेन, और वी नेवर एक्सेस इट और नेवर सर्फ इट अगेन, करेक्ट? एंड टू मेक अवर वेबसाइट लुक मोर गुड, ओके, so for that we need our website to be well designed, okay, and it should look attractive, and for that only we people are going to learn with Cascading Style Sheet, correct? Agree everyone? Yes, ma'am. Okay, so with that let me open the slides for our CSS. Yes. So everyone, are you seeing my slides, guys? What is No, CSS? madam. No, madam. You are not seeing my slides? No. Let me share. Okay. आपके son, daughters भी बैठे हैं क्या? Yes. Right? Very good. Fine. What is CSS? Why to learn CSS? Applying CSS, selector, color, and background. Okay. Now, let's see. Cascading Style Sheet is a design language that makes a website look more appealing than just a plain or uninspiring piece of text, including color, layout, and font, written in a markup language like HTML. CSS helps web developer to create uniform look across several pages of a website. CSS make it easy to change style across several pages at once. For example, a web developer may want to increase default text size from 10 point to 12 point for 50 pages of website. To improve web presentation capabilities,
CSS introduced by W3C World Wide Web Consortium. It was intended to allow web designers to define the look and feel of their web pages and to separate content from documents layout. Is this clear to everyone? Already we discussed. So is this clear? Yes, ma'am. How does CSS work with HTML? If HTML were the engine component of a car, CSS would be the body style and the paint job. Okay, that is what. Now we can see. Say I will give here one more good example, like human body. Human body, simply the skeleton. We can say skeleton of human body is your HTML. Skeleton of human body is your HTML. Okay. When we have the skin on our body. Okay. Sorry. When we bring skin to our body, skin is there. Okay. So this becomes, this we can say it as an skeleton, means the text or data that we want to place in our body. Then this is done with a skin. We can say skin that brings your HTML. And when we put clothes on this skin to look it attractive, when we put clothes and makeup, we can say when we put clothes and makeup to our skin, then what it is? Can we say this as a CSS? Hello? Everyone understanding? Yes, ma'am. Okay. Same Yes. example they had given here. If HTML were the engine component of a car, CSS would be the body style and the paint. Okay. देखो एक कार में इंजन लगता है तो वो तुम्हारा कार बना रहा है, करेक्ट. लेकिन कार में इंजन लगने के बाद में ऊपर का जो पूरा बॉडी बनता है, दैट इज द स्टाइल एंड द पेंट. तो बॉडी स्टाइल एंड द पेंट becomes the CSS. A web can run without CSS, but it certainly isn't pretty. So CSS makes the front end of a website shine and it creates a great user experience. Without CSS, websites would be less pleasing to eye. It's harder to navigate. In addition to layout and format, CSS is responsible for front color and mood. Everyone clear? Yes, ma'am. Then coming to why to learn CSS. CSS is a simple design language to simplify the process of making web pages presentable. Some of the key advantage of learning CSS is CSS saves lots of time, easy maintenance, page load faster, superior style to HTML, and multiple device compatibility. Fine. Now, now we come to our main. Hello. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. One minute. Yes, ma'am.
हाँ, डिवाइस क्या हुआ? Hello, hello everyone. Is I'm audible? Yes, ma'am. हाँ. Actually, I think it is shuffling between my Wi-Fi and this thing. That's why I'm getting the problem. Let me check. 1 minute, guys. Why it is so? I don't know. Hello, hello, hello. Is I'm audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now it is not shuffling. See, now it's shuffling. Okay, 1 minute. हाँ. अगर मैं ये डिवाइस निकाल दूं तो चलेगा? Hello everyone, is I'm audible now? Yes. Fine. So let me work on Wi-Fi for some time. Okay. So everyone can listen me now clearly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's see one simple example first and then I'll come to the types. So to understand the example, let's go to the Visual Studio Code. File, open folder. I'm creating some new folder for HTML demos. Okay. So guys, everyone seeing my VS Code? Yes, ma'am. Fine. Now coming to this VS Code, here I'll come and just say example1.html. Example1.html. Correct? Now here everybody know when we press the exclamatory, it's coming with this. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Hello everyone. Is I'm audible, guys? Yes, ma'am. Hello, 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 hello. Yes, ma'am. You're audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am, audible. So guys, listen. Either this is a body tag. Everybody know with HTML. I'm writing here H1. Welcome to Prognoz technology. Welcome to Prognoz technology. Okay. Now see, this is I return a text. Fine. I want to run this. How you are running this? Open with live server. Clear? Okay. Fine. It's looking simple.
Fine. Very simple kind of thing we had done. Here I written HR color is equal to red. Here this is an attribute I added. HR color is equal to red. तो गाइस देखो सिंपली हमने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखा और उसके नीचे HR कलर इज इक्वल टू रेड देने के बाद में वही चीज आपकी कितनी अच्छी दिख रही है. सिंपल सा चीज है ना. अंडरस्टैंडिंग. हेलो. Yes, ma'am. फाइन. आपको लग रहा है कि जो वेलकम टू प्रोग्नोज टेक्नोलॉजीज आपने लिखा है दैट शुड ऑल्सो लुक मोर अपीलिंग. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे. यू विल राइट अ एट्रीब्यूट कॉल्ड एज स्टाइल. स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर कोलन aquamarine and I return color colon dark blue. Can you see the change? Yes, ma'am. It's looking more good now. Fine. Now, this is the one way where we had used the CSS. Everyone can see this is your CSS. Contain CSS styling declaration to the element. Okay. So now we will understand the different types of CSS. There are three types of CSS. Okay. One is we can say inline CSS. Second one is embedded CSS. And third one is external CSS. Everyone listening? Yes, ma'am. Okay. Now, when I am talking, there are three types of CSS. So what does it mean by inline CSS? Now see guys, I written here H1. I put style is equal to background color, aquamarine color, dark blue. Okay. Again, after HR, I'm again mentioning H1. Okay. And I'm putting session, first session, on HTML with CSS. Yes. Are you seeing here? This one is also H1 tag and this one is also H1 tag. But your CSS is implied to only one H1 tag. Can you see this? देखो मैंने दो H1 लिखे हैं लेकिन इधर मैंने इसको स्टाइल दिया है तो इसके लिए स्टाइल आ रहा है और ये आपका प्लेन आ रहा है. Everyone called it as inline styling. This one we can call it as मैम मैम वॉइस आवाज ब्रेक क्लियर हो नहीं रहा आ है. रहा है. hello everyone. Is I'm audible now? Yes, ma'am. So now you people can see that I had written two tags for H1. The first one I had given here the style and second one I had not given anything. Okay. So when you print this or when this is seen on your web page, what we are seeing guys?
See, this is also H1 tag and this is also H1 tag. But the first one looks decorative, whereas the second one is very much simple. Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. And this type of styling, we called it मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Are you speaking in mute, ma'am? नहीं मैडम ने लेफ्ट किया है. आई थिंक वो फिर से सेशन चालू करेंगे. मैसेज कोई आता तो देखते हैं. Okay. hello guys, is I'm audible now? Yes. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now, see guys, so we are seeing with the inline styling. Fine. So inline styling में क्या होता है? Okay. Now we are having the three components when we are putting the styling. Okay. And what are those three components? What are those three things? One is your selector. Okay. Now here, when we go for inline, we no need to think about selector because we are directly writing the code for selector. Are you seeing? ये H1 क्या है आपका? It is your selector. Everyone seeing? Are you seeing my screen? Yes, ma'am. This is my selector. Okay. Then in that we are having again two things to understand. One is your property. This background dash color, it is your property. So we can say background dash color is my property. Everyone listening? So see guys, tell me as soon as you get a problem in my voice, please tell me. Property. And now after checking with this as an property, the value you given for the property and the aquamarine, what you are giving, it is nothing but the value. Everyone clear? Yes, ma'am. ये इसका वैल्यू है. ओके. तो आपने दिया स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट फॉर H1 टैग. तो H1 इज माय सिलेक्टर जिसके लिए हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी में आपने दिया
बैकग्राउंड डैश कलर एक्वामराइन, तो वो वैल्यू हो गया। जब आपने कलर दिया सेमी कोलन करके आप उसको दूसरी तुरंत प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एंड दैट इज द कलर। कलर कोलन डार्क ब्लू, again color is the property, dark blue is the value. Like that you can put for multiple properties. So everyone please take down this piece. And this is all telling you about the inline CSS. This is what telling you about the inline CSS. Everyone clear? तो inline CSS में क्या होता है कि I may have multiple H1 tag, but जिस H1 के लिए आपने स्टाइल दिया है उसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा। अंडरस्टूड? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज टेक डाउन विथ वॉट एवर आई हैड गिवन द एनोटेशन। मैंने जो एनोटेशंस के साथ में लिखा है उसके साथ आप ये लिख लेना प्लीज। ओनली बॉडी पार्ट लिखना, ऊपर का तो बॉयलर प्लेट कोड है, नो नीड टू राइट, सिंपली राइट द बॉडी पार्ट। Done. कंप्लीटेड? Yes. Yes, ma'am. एवरीवन डन? नीरज, राघवेंद्र, रानी, श्रद्धा, सकाराम। सकाराम Done, समझ ma'am. में आ रहा है? Yes, ma'am. स्नेहल, तरुणी। सकाराम एडवांस जावा क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? Ma'am, time नहीं मिलता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
Okay, completed, everyone? Yes, ma'am. Fine. Yes. So next we will move on to the embedded style sheet. Okay, embedded styling. Hello. Yes, मैम एम्बेडेड इंटरनली भी होता है ना एम्बेडेड और इंटरनल embedded, or we can say it as internal, सेम है embedded or internal CSS. Okay, so let us see with that. Let me first clear these annotations. तो देखो नेक्स्ट वन है एम्बेडेड. एम्बेडेड में गाइस क्या होता है? सो सी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्टाइल ओवर हियर, कैसे होगा? अभी ये स्टाइल मैंने ये h1 को लिखा, तो इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस h1 टैग, बट I want the style to be implemented for all the tags that are coming in this. Okay, all h1 tags that are coming in this. So for that we are coming to the head tag. Everybody know the differentiation between the head and body? Everybody know here what is head and what is body? Guys, yes or no? Yes, हाँ, ma'am. Yes. Ma'am. तो head tag के अंदर आपको लिखना है style. We are taking one new tag that is called as the style tag, and in this we write the selector. For example, h1 is my selector as of now. I want it to do with h1, and I am providing here background dash color colon aquamarine, and I'll put color colon blue. Fine. And then guys, remove it from here. Remove it from here. Now simply you return h1. Welcome to Prognoz Technology. First session on HTML with CSS. h1 enter. ठीक है, everyone understood this? Now simply just put open with live server. Are you getting, guys? Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी वेलकम टू प्रोग्नोज टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सेशन ऑन HTML विद CSS, मेंटर हसीना नर. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू टेक दिस एज h2, तो देखो इसको मैंने h2 लिया है, तो आपके पास आपने अभी स्टाइल किसके लिए लिखा है? h1 के लिए, करेक्ट? Save and come back to this. What happens? हेलो. स्टाइल रिमूव हो गया. हाँ, तो ओनली H2 का style h1 आपने किसके लिए लिखा है? किस सिलेक्टर के लिए लिखा है? h1 के लिए. तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर h1, नॉट फॉर h2. तो इफ आई वांट समथिंग सेम स्टाइल फॉर h2, तो आई विल राइट हियर h1 comma h2. Understood? Yes, Or ma'am. if I want some different styling for h2, so I can put here h2 Can you see? Hello? Can you see? I'm not Yes, ma'am. speaking, guys, at the time. Now I think I'm audible properly. There is no disturbance in my net. Yes, ma'am. There is no network. No network. So now you guys are understanding the difference. देखो मैंने h1 लिखा, h2 लिखा. h1 के लिए I put background dash color aquamarine. For h2 I written background color beast, color colon maroon. Okay, one more. Suppose I had taken here body. And I will just put background
dash color colon. What I will do? Shall I take light yellow? I'll take light coral. Understanding? बॉडी बोलेगा तो किसको आ रहा है? पूरा पेज को? Yes. Fine. Understood? Purposefully I had taken the dark color so people can understand the differences. So see, आप इसको चाहिए तो इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं. You want it to be the gray. You want it to be something like this. See, you can use the RGB also. Everyone clear with this? Everyone clear with this? Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. So this is the embedded style or internal style. Fine. Okay. Now guys, see, I'm creating here another one example. Example 2.html. Correct? Example 2.html. I put here some h1 tag. See, I'm putting here h1. Hello everyone. Session on HTML and CSS. Correct? अभी guys, आपने कुछ CSS लिखा example 1 के अंदर, but example 2 में वो CSS नहीं आएगा. आएगा? ये पूरा प्लेन दिख रहा है. फाइन. तो ये क्या होता है ना कि आपने पहले इनलाइन देखा, अब आपने ये जो स्टाइलिंग देखे वो क्या है? तो दिस इज एन एम्बेडेड स्टाइलिंग. एम्बेडेड मतलब क्या कि जिस पेज में आपने आपका HTML लिखा है उसी के हेड टैग में स्टाइल लिख के अपने उसी में आपका CSS डाला हुआ है. तो इसको आप बोलोगे this is what we can called it as internal styling or embedded styling because it will bind to this HTML only. But suppose I want some styling and that should be implemented on all HTML pages. तो कैसे करेंगे? Okay. So now you people first take down this one by telling this is embedded styling. You can say embedded मतलब ये पेज के अंदर आ गया. Embedded style or you can also call it as internal styling. Internal CSS. Or we can say it as an embedded CSS. So you understood inline, you understood embedded. Clear guys? Yes, ma'am. Huh. All of you please take down this. So I'll go to external. Completed? Yes. Yes. Everyone completed? Yes, ma'am. So now I will come to the external styling.
नाउ गाइस, ये आपने जो स्टाइल लिखा है यही सिर्फ मैं यहाँ से कट कर रही हूँ. See, I'll just remove it from here. Okay, to make you understand, I'm just removing it from here, and here I make one file. You can give any name to that file, file1 dot CSS, but it should have the extension dot CSS, and you put it over here. Everyone understood? Have you understood this? Yes. Okay. Yeah. Now, but now you come here and see आपका ये रन हो रहा है क्या? प्लेन हो गया. अब मैंने वो वहां से रिमूव किया, यहाँ पे नहीं है, और अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें भी नहीं है. तो मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के लिए वो स्टाइल लेकर आना है. फाइन. तो इसके लिए आप यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंक टैग. लिंक H reference is equal to style1.css. rel relation is equal to style sheet. Type is equal to text slash css. Bus. This much part you people have to write. Okay? In both the file. ये एग्जाम्पल 2 में हो गया. देखो अभी आप एग्जाम्पल 1 रन करो. Open with live server, nothing is there. You come to the example 2 and run. What happened, guys? Now it is coming here. Same thing. Copy this in example 2 also, 1 also. दिखा? देखो. Everyone can see. Yes, ma'am. It is coming in all the pages now. तो हमको जो पेज पे वो स्टाइल इंप्लीमेंट करना है उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिंक टैग से लेकर आओगे. ओके, सो लिंक H reference and you give the name of that style का file, that is style1.css. So whatever the style you had given there, all that style will be implemented to the H. अभी हमने इधर स्टाइल किसके लिए लिखा है, बॉडी के लिए लिखा है, H1 के लिए लिखा है, H2 के लिए लिखा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइटिंग सम पैराग्राफ. मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा. पैराग्राफ के लिए लिखा मैंने कलर कोलन ब्लू. उसका जो टेक्स्ट का कलर है दैट शुड बी ब्लू. फाइन. और बैकग्राउंड डैश कलर कोलन पिंक. ओके, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन पिंक. फाइन. और ओके, come to example 1 and here put this thing p. ये जो आपने लिखा है ना नीचे, to just put it over here in the p tag. Can you see, guys? Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. फाइन. अगर आप कोई भी पैराग्राफ क्रिएट करोगे तो वो पैराग्राफ अगर हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाती हूँ फॉर द CSS and HTML. I want to write some notes for CSS and HTML. So I'll come here. I will put say I am copying this and putting in my this thing here. फाइन. होम में जाओ और यहाँ पे ये जो है HTML CSS make it H3.
H3 कंट्रोल V और इसको भी होम and this thing I want to bring it in a one paragraph, correct? और इसमें फिर से you put this in the H3 tag, this in the H3 tag, control V, and then you put this again in the P tag. Fine. Are you getting, guys? Yes, ma'am. Yes. See, fine, na? Hello everyone, session on HTML and CSS. HTML and CSS. Okay, what is HTML? Correct. So now everyone understood this. Is this clear to all? Yes, ma'am. Fine. So now coming to our slides. Where is that? So guys, you understood what is inline, what is internal, and what is external? Yes, ma'am. Everyone? Yes. Today I had not taken lot for CSS, but I had simply taken for you what is the various types of styling. Okay, अब वो styling आप कैसे करते हो, that depends on the situation कि आपको कौन से टाइम पे क्या styling चाहिए. Okay, ये आपकी situation पे depend करता है. Fine. So I'm just putting this over here. Okay. So see guys, when I have inline styling, when I have embedded styling and the external styling. Okay. So one more good thing you want to understand here is that कि मेरे पास सब स्टाइलिंग है. ये मेरा एक्सटर्नल स्टाइलिंग है. एग्जाम्पल 2 में मैंने यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइलिंग लिखा हुआ है. यहाँ पे लिंक होने के बावजूद मेरे पास ये भी है. फाइन. और हियर आई हैव द स्टाइलिंग फॉर H1. और इधर क्या स्टाइल है H1 के लिए? aqua marine है ना. तो एग्जाम्पल 2 में मैं H1 के लिए स्टाइलिंग दे रही हूँ. बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू and color white. Clear everyone? Fine. Okay. क्या होगा? कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? सी मेरे पास एक्सटर्नल ने मैंने ये लिखा है और when I come to this I had put some embedded styling. तो which will apply? Embedded वाला अप्लाई होगा क्या आपका एक्सटर्नल वाला अप्लाई होगा? Embedded. हाँ, Embedded. embedded. All agree? Yes, ma'am. Everyone? Yes, it is right. तो यहाँ पे आपका embedded styling आएगा. If you go and see, करेक्ट, उसने उसको ओवरराइड किया. मतलब जब उसको एक्सटर्नल से स्टाइलिंग आ रहा है लेकिन उसका जब वही स्टाइल एम्बेडेड में अपना खुद का है तो वो एक्सटर्नल का इंप्लीमेंट नहीं करेगा. अंडरस्टूड गाइस? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? फाइन. Yes, ma'am. Okay. If you want to implement this for H3, you can even see. आ गया H3 के लिए भी. Yes, ma'am. We can put H1, H3.
कॉमा सपोज पैराग्राफ को भी मुझे यही चाहिए. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. निकाल दो पैराग्राफ. क्लियर? फाइन. अभी सेकेंड थिंग, अगर समझो मैंने इसमें से एक H1 को यहाँ पे स्टाइल दिया, स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड एंड कलर कोलन ब्लैक. क्या होगा? इनलाइन यूज होगा. हाँ, तो इनलाइन, इनलाइन भी है, एम्बेडेड भी है, एक्सटर्नल भी है. तो अगर उसके लिए इनलाइन है तो वो पहले प्रेफरेंस इनलाइन को देगा. ओके, अगर इनलाइन नहीं है तो एम्बेडेड पे जाएगा, और एम्बेडेड नहीं है तो एक्सटर्नल पे जाएगा. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? First preference will be given to inline. If inline is not there, it will search for embedded. If embedded is not there, it will go for external. Clear, everyone? Yes, ma'am. Clear. ये चीज clear हुआ सबको? So that are the types. Okay, and I had given you this image. It will give you much more explanation. Do you want to take down anything from my course? Hello? This one? Everyone please take down कि आप, you at least take down कि you have to create a separate file style1.css. you have to write the CSS. इसमें देखो आप कुछ नहीं लिखते हैं, नहीं तो most of you will do it like this. यहाँ पे आपको स्टाइल लिखने का याद आ जाएगा, यहाँ पे हम स्टाइल नहीं लिखते हैं. Remember this, हर एक चीज का अपना तरीका है. style1.css create करते हुए directly started writing our selector. This is my selector. Everyone can see this is my selector. Body is my selector. Open curly bracket, closing curly bracket. We can write couple of stylings here. Background dash color is my property. Light golden rod yellow is my value. Everyone clear? H1 is selector, H2 is selector, P is selector. Clear? Yes, ma'am. Yes. See, I'm not going for much more properties today. Only simply today we will understand what are the types of styling and which styling gets the higher preference, that we understand. And now we will see with some more things like the type selector. Okay, so टाइप सिलेक्टर देखते हैं. सिलेक्टर्स में डायरेक्टली डिसेंडेंट्स पे आ गया ये. नो, आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लास एंड आईडी सिलेक्टर. ओके, so today we will see with what part, what is the class selector, what is the id selector. Okay, everyone done with this? Anything Yes. to take down, writing or completed? No, ma'am. Complete. Completed. Fine. Now let's see with the id selector and let's see with the class selector. So guys, see, listen. Example 3 dot html. Fine. I put here this thing. H1 welcome to
CSS learning in Prognoz. Welcome to CSS learning in Prognoz. Fine. This is our first session for CSS learning. इधर ही देख रहेगा, इसमें देख, इसमें तेरे कपड़े नहीं है, उसमें अब्बा के हो, कबर्ड में देख। इधर इधर ही देख, डिस्टर्ब कर मत। See here, H1, this is our first session. Welcome to CSS learning in Prognoz. This is our first session for CSS learning. Prerequisite to learn CSS, you should have proper understanding of HTML tags. Clear everyone? अब मैंने ये H1 के लिए लिखा. Fine. I will put here. Okay, I'm just showing it in embedded only. Style और मैंने यहाँ पे लिखा H1. Everyone see. And I return background dash color colon light blue and color colon dark blue. Everyone clear? Just see what happens. सबको दिख रहा है क्या हो रहा है? Hello? Yes, ma'am. अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए. I want only one that is having some ID. For example, I have here ID is equal to HH1. I have here ID is equal to HH2 and I have here ID is equal to HH3. ऐसे मेरा तीनों बन गया. फाइन. और मुझे यहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, आई वांट टू गिव ओनली टू द आईडी HH1. तो आप आईडी लिखना है तो आप इसको लिखेंगे #HH1. एवरीवन अंडरस्टूड? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हुआ? देखो, आपने ये लिखा, लेकिन जिसके लिए आपने HH1 का आईडी लिखा है सिर्फ उसके लिए ये आ रहा है. समझा? Yes. #HH2 background dash color colon understood? Everyone clear? Hello? Yes, ma'am. Yes. Please take down this. So this is called as ID selector. This is called as
आईडी सिलेक्टर। बेसिकली इधर आप आईडी रिपीट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज अ कन्वेंशन आईडी शुड नॉट बी रिपीटेड। अगर आपने इधर अगर आपने इधर HH1 लिखा तो सेम इम्प्लीमेंटेशन आपका HH1 के लिए भी आएगा, बट प्रैक्टिकली आईडी शुड नॉट बी सेम। ओके, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आईडी शुड नॉट बी सेम। अगर आपने इसको और इसको सेम आईडी दिया तो इट वर्क्स। HH1 जिसका आईडी है दैट इज गेटिंग दिस बैकग्राउंड कलर, ओके, बट आईडी कैन बी रिपीटेड। ओके, now next we can have the same thing by using class selector. Everyone completed ID? Yes, ma'am. Hello? Everyone understood? Shall I proceed for class selector? This Yes, is your ma'am. ID selector. Okay. Now the same thing. See everyone, just I'm clearing this annotation. Up ID selector. So how I can do with the ID selector? Suppose class selector, sorry, Control C, Control V, Control V. ये आपने किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, समझा? जिसको अपने आईडी HH1 दिया उसके लिए HH1 आ रहा है, HH2 के लिए HH2 आ रहा है। फाइन, नो प्रॉब्लम। अब सेम थिंग, आई विल जस्ट रिमूव दिस and I'll put dot HH1 and here I will put dot HH2. फाइन। और यहाँ पे आपको आईडी नहीं देना है, उसके जगह पे आपको देना है यहाँ पे क्लास। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? हाँ, क्लास आप बिंदास रिपीट कर सकते हैं। आईडी के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि हम रिपीट नहीं करना है हमको, बट इट्स वर्किंग, बट देन अकॉर्डिंग टू द रूल आईडी शुड बी यूनिक। अभी मैंने यहाँ पे क्लास दिया तो सी इट्स वर्किंग। क्लियर? आउटपुट विल बी द सेम। सिर्फ हमने आईडी निकाल के उस पे क्या किया है, क्लास लिखा है। ओके, नाउ विल से डिफरेंस। हु विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस?
मैम क्लास में अपार्ट फ्रॉम वन टैग मल्टीपल टैग्स कैन बी इंक्लूडेड करेक्ट, और अभी वो क्वालिटी आपको विल बी पता है। फॉर 1 मिनट इंडिविजुअल। 1 मिनट, आई विल जस्ट शो यू। लाइक अभी हम यहाँ पे एक HH3 लिख रहे हैं, फाइन, और इसमें इसमें हमने दिया फॉन्ट फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश फैमिली इज इक्वल टू लिसिडा सेंस, फाइन। देन आई गिवन font dash weight, font dash weight colon bold, font dash weight colon bold, fine. And I given border colon 2 pixel solid and red, fine. So this is I given, okay. अब यहाँ पे देखो आपने HH1 लिखा है फर्स्ट में, वहां पे मुझे 2 चीजों को इंप्लीमेंट करना है। कुछ चीजें मैंने HH3 क्लास में लिखी है और कुछ मैंने HH1 में लिखा है, फाइन। तो आई वांट बोथ दीज थिंग्स फॉर दिस फर्स्ट 2 1। कैन यू सी? पहले 2 में कुछ फर्क दिख रहा है बाकी वालों से? यस मैम, वो बॉर्डर ऐड हो गया। हाँ, तो इसमें 2 CSS आ रहा है, ओके। तो 2 CSS हमने कौन सा वाला दिया है? दिस कैन नॉट बी डन विथ आईडी। आप लोगों को डिफरेंस चाहिए था, तो HH1 मतलब मल्टीपल क्लासेस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। HH1 HH2 नहीं, क्योंकि वो दोनों भी बैकग्राउंड का दिखा रहा है, तो हम HH1 और HH3 का कॉम्बिनेशन मैंने दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसमें मैंने उसको फॉन्ट स्केलिंग दिया है, अंडरस्टूड? यस। तो ये वाला स्टाइल और ये वाला स्टाइल मुझे साथ में लेना है, तो उसके लिए आप उसको क्लास इज इक्वल टू HH1 स्पेस HH3 दे सकते हैं। एवरीवन क्लियर?